Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the Supreme Court's verdict of going that not all religious conversions are illegal. So recently, Supreme Court to MP government has revisited the clause of getting about act on religious conversions. So the Supreme Court told the Madhya Pradesh government that all these respective conversions cannot be said to be illegal, and they refused to stay an order of the Madhya Pradesh High Court that restrained the state government from prosecuting interfaith couples who get married without informing the district magistrates. So recently, we have seen that in the coming times, okay, uh, various number of this bodies associated with Madhya Pradesh was intended to replace the existing Madhya Pradesh Dharma Swatantra Abhiniyam, that is of 1968. Also, this 1968 law faced a challenge in the High Court, but it had been upheld by the Supreme Court in 1977. Okay. Also, in January 2021, an ordinance was promulgated. In March 2021, the the Madhya Pradesh State Legislative Assembly has passed the Freedom of Religion Act of 2021. Okay, so in this respective category जो religious conversions होते हैं, okay, about that every individual has a natural entitlement to religious faith and freedom of conscience. So here there are various reasons behind these conversions. Conversions force के लिए भी हो सकता है, कन्वर्जेंस बाय ऑफरिंग अ बेटर लाइफ के लिए भी हो सकता है, कन्वर्जेंस फॉर मैरिज हो सकता है, कन्वर्जेंस टू एस्केप द रिजिड हायरार्कियल सिस्टम ऑफ कास्ट ये भी हो सकता है, कन्वर्जेंस बाय फ्री विल और फ्री चॉइस ये सब के लिए भी हो सकता है, और लास्टली कन्वर्जेंस टू गेट रिजर्वेशन बेनिफिट्स भी यहाँ पे हो सकता है. Okay, so therefore today there are various arguments which are in favor of this anti-conversion bills, because these laws only ban and punish forceful religious conversions. So the fundamental rights under Article 25, which says about the right to propagation of a religion, did not extend to forced conversions. So there is no fundamental right to convert another person to one's religion. Also, there are various arguments against such number of conversions, because according to some activists, such laws are used to target religious minorities and interfaith couples. So these laws would be used to target even voluntary conversions and even curb the fundamental rights of the freedom of conscience under Article 25. So these acts do not satisfy the test of reasonableness and fairness, and also go against the fundamental right under Article 14 and under Article 21 of the respective constitution. So therefore, today we could see that these anti-conversions laws, which have been challenged in the court ever since Orissa moved the first such legislation. So today we could see that यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि नॉट ऑल कन्वर्जन्स आर रेस्पेक्टिवली इलीगल. तो अभी यहाँ पे इसी के बेसिस पे यहाँ पे ऑर्डर पास किया गया. तो अभी देखते हैं इन द कमिंग टाइम्स कौन से पॉलिसीज या अप्रोचेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेके आते हैं, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा. ओके, सो only 6 states have laws that bearing use of force and fraud for religious conversions. So 2006 में राजस्थान, गुजरात 2003, मध्य प्रदेश 1968, okay, then Himachal Pradesh 2007, Arunachal Pradesh 1978, Orissa 1969, Chhattisgarh 2000, Tamil Nadu 2002, as well as we could see the region of Uttar Pradesh as well as Bihar slowly and slowly moving towards such number of approaches. Okay, so this red markers were there have been proposals to enact anti-conversions laws in Jharkhand, Uttarakhand, and also Karnataka. ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग को यूपी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, तो हम लोग को थोड़ा धीरे धीरे करके यूपी में भी ये सब देखने को मिलेंगे. ठीक है, दैट इज द रूल्स अगेन कन्वर्जेंस. ओके, तो दैट इज विथ दिस रेस्पेक्टिव डिसीजन. नेक्स्ट पे आते हैं disciplinary control over council of ministers. See, we know that the council of ministers are directly on the pleasure of the president of India, and they are appointed via the recommendation given by the prime minister to the respective president. So this council of ministers alongside the prime minister is collectively responsible to the lower house of the parliament. ओके, और इसका अगर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बोलूं तो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम इज collectively responsible to the legislative assembly.
ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लाइक पीएम सीएम डज नॉट हैव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सो पीएम और सीएम के पास डिसिप्लिनरी कंट्रोल उनके पास नहीं है कि डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाए उन लोग के कंडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये बोला गया है कौन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, तो ये छोटा सा एक न्यूज था बिकॉज रिसेंटली this observation was done by a five-judge constitution bench headed by Justice S.A. Nazir, who came with delivering its judgment on the issue of the freedom of speech and expression of these public functionaries. Okay, so here he have told that the Prime Minister of the Chief Minister does not have disciplinary control over the members of the COM, and it is true that in practice, a strong Prime Minister or Chief Minister will be able to drop any minister out of the cabinet. But in a country like ours, where the multi-party system and where coalition government are often formed, it is not possible that at all times for a prime minister or chief minister to take a whip wherever a statement is made by some of the council of ministers. ओके, तो यहाँ पे ये सजेशंस दिया गया है कि यहाँ पे आप लोग डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं ले सकते और उनका भी एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये मायने रखता है इन एवरी टाइप ऑफ पॉलिसी डिसीजंस मेड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। ओके, तो उसी के बेसिस पे ये डिस्कशन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, इस कंट्री के बारे में क्या ही बोलूं, हर दिन लाइक इट्स बेसिकली डे नॉट एंटरटेन बाय पाकिस्तान इज अ डे वेस्टेड। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए एंटरटेनमेंट ही है। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट रिसेंटली हैज ऑर्डर्ड ऑल मॉल्स एंड मार्केट्स टू क्लोज बाय 8:30 PM amongst other measures to go for a conservation plan for their respective energy। ओके, तो ये रिसेंटली आया गया है क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से कैश ट्रैप्ड कंट्री है ऑफ अराउंड 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, विच इज अराउंड $273.4 मिलियन। तो आज यहाँ पे सीवियर हेडविंड से इन्फ्लेशन छू के पहुंच गया 21-23 में, जहाँ पे सिंगल नंबर में रहना चाहिए वहां पे जाके इन्फ्लेशन छू गया है 21-23% के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि पाकिस्तान का आज क्या हालत हो गया है। और कल परसों हम लोग रिसेंटली न्यूज़ भी सुनेंगे कि पाकिस्तान का जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है, ओके, जो अभी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक है, सो ये आज एक बेसिकली न्यूज़ है। तो ये रिसेंटली आप लोग को ये भी सुनने को आएंगे कि अभी पाकिस्तान धीरे धीरे करके इंडिया को भी टारगेट करेंगे। ओके, तो ये नेचर है पाकिस्तान का। बिकॉज अभी देखो यहाँ पे 67-70% ऑफ द पाकिस्तानीज, ओके, दे सपोर्ट द रियाइन ऑफ तालिबान टू डायरेक्टली कम। ओके, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया जो पंजाब है वो एक पाकिस्तानी आर्मी से लेने को बहुत दिक्कत होगा उन लोग को। तो अभी फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 5-6 साल में पाकिस्तान और ज़्यादा अनस्टेबल बनने वाला है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेंगे। और अभी देखना उन लोग के मंत्री, उन लोग के जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ हो या भुट्टो हो, तो कोई भी हो, तो वहाँ पे ये लोग इंडिया को टारगेट करने लगेंगे कि हम लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेना ये सब तो होता ही होगा ही होगा। ओके, दैट इज वेरी मच ऑफ एमिनेटिंग बिकॉज अभी अगर पाकिस्तान के पूरे जनता को ये लोग को एक साथ लाना है तो ये देयर इज ओनली वन थिंग विच इज दैट इंडिया के अगेंस्ट में सारे बात बोलो, तब जाके ये लोग यूनाइटेड आएंगे, नहीं तो ये लोग पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग का कंट्री का कोई यूनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ कंट्री लाइक अस, अ ब्यूटीफुल कंट्री लाइक अस। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोग का प्रॉब्लम अनिवार्य है, ये सब होगा ही होगा उन लोग का प्रॉब्लम। तो अभी इसीलिए इनका जो एनर्जी क्राइसिस है, इसी के लिए यहाँ पे जो उनका मेजर्स है, तो इनका जो मॉल्स है ये सब 8:30 बजे से पहले बंद किया जाएगा, जस्ट टू सेव द एनर्जी दैट इज डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम दिस रेस्पेक्टिव फ्यूल दैट दे आर burning basically this conventional fuels, जो दो इट्स फॉसिल फ्यूल्स, दो इट द कोल्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये आज हालत है पाकिस्तान का। ठीक है, तो उससे ये क्या करेंगे, ये कंजर्व करेंगे 30% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विच कुड सेव अराउंड 62 बिलियन। तो ये उनका एक प्रोसेस है पैसा सेव करने का। तो देख लो एक कंट्री का हालत जब तुम अच्छे प्रिंसिपल्स पे नहीं चलते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया टू कट फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो रिसेंटली यहाँ पे इंडिया ने बोला है, इंडिया सेड टू एम फॉर अ $17 billion कट इन फूड fertilizer subsidies in financial year 24. So the 26% reduction in subsidy spending is aimed at reining in fiscal deficit to government officials say. Okay, so यहाँ पे India aims to cut spending on food and fertilizer subsidies to around rupees 3.7 trillion in the fiscal year starting April, at a 26% cut from this year, which is basically balloon during the COVID pandemic. तो आज ये हम लोग जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में बोलते हैं, टुडे वी नो दैट India fertilizer subsidy was at around rupees 1.6 trillion.
Okay, so slowly, and that is around 2021-22. Okay, so which increasingly raised to around 2.3 trillion in this respective year. So India meets about 75 to 80% of the volume of consumption of urea for domestic production, while the rest is imported from Oman, Egypt, UAE, South Africa, and Russia today. Okay, so therefore, nearly half of this diammonium phosphate, which is the major ingredient of fertilizer requirement, is imported via the areas like West Asia and countries like Jordan. So what is this fertilizer subsidy? So see, farmers buy fertilizers at MRPs, that is the maximum retail price, and below their normal supply and demand based market rates. So the MRP of a neem coated urea, for instance, is fixed by the government at rupees 5,922.22 per ton, whereas its average cost plus price payable to domestic manufacturers and importers comes to around rupees 17,000 to 23,000 respectively. So the difference, which varies according to plant-wise production cost and import price, is footed by the center as subsidy. So the MRPs of the non-urea fertilizers are decontrolled or fixed by the respective companies. So how is the subsidy pays and who gets it? So the subsidy goes to fertilizer companies, although its ultimate beneficiary is the farmer who pays MRPs less than the market determined rates. Okay, so from 2018, we could even see the direct benefit transfer system was introduced, wherein subsidy payment to the companies would happen only after actual sales to farmers by retailers is being done. Okay, so only after the sale getting registered on a respective app, which is known as Urvarak, Urvarak platform, can a company claim subsidy. Okay, with this being processed on a weekly basis and payments remitted electronically to its bank account. तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिया गया है सो दैट दिस रेस्पेक्टिव fertilizer elements could reach to the needy as soon as possible after their respective procurements. तो आज यहाँ पे बोला गया है कि like today we are going to cut this fertilizer subsidy so that we could save more and more money so that we could make the respective economy bloom in the coming periods. Okay, नेक्स्ट पे आते हैं लास्टली ब्लू इकोनॉमी एंड मैराइन पॉपुलेशन. तो रिसेंटली we have seen that this editorial has come into this picture. It says about the blue economy. तो जब हम लोग blue economy के बारे में बोलते हैं, so what is the concept of blue economy? So see, the blue economy encompasses a wide range of economic activities that is pertaining to the sustainable development of resources and assets in the oceans, related rivers, water bodies, and coastal regions in a manner that ensures equity, inclusions, and innovations. So, according to the World Bank, the blue economy is the sustainable use of ocean resources for economical growth, improved livelihoods and jobs while preserving the health of ocean ecosystem. Okay, तो आज हम लोग ब्लू इकोनॉमी में बहुत सारे फोकस किए हुए हैं बिकॉज इफ आई सी अबाउट द IORA, that is the Indian Ocean Rim Association. Okay, so it points out that blue economy would contribute to food security, poverty alleviation, and investment which enhance maritime connectivity and enhance diversification, job creation, and socio-economic growth. So today, from the business perspective also, the blue economy requires innovative and dynamic business models, which forms business connections between India and other relevant countries. Also, the focus on blue economy will enhance economic cooperation with some of the littoral states in India's neighborhood. So as India becomes more and more developed, maritime security will also obtain from more strategic dimension in this respective area of blue economies. तो आज यहाँ पे जो हम लोग का फिशरीज एंड मिनरल्स है, ओके, माइन लोकेशन है, ओके, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हम लोग यहाँ से बहुत सारे मराइन रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं. Also, this area, blue economy, is important for the shipbuilding and the shipping industry also, because we know about the region of Indian Ocean even, which is coming under the blue economy, has become a global economic corridor. Okay, today, because of this region, we need to shift our focus towards maritime security strategy also. Also, this strategy is needed for any number of environmental challenges that is directly coming in from this rhyme of area. So today, if a blue economy gains prominence, maritime transportations and information systems grow, the ports and shippings, mineral research and exploitation directly goes on in this area, we could see that the course of a nation directly gets changed. So mindful of these responsibilities, we could see that even our Indian Navy as well as the Indian Coast Guards has charted out its course and embarked on an ambitious plan
to renew all the assets of them and increase capabilities by matching its high performing people with modern equipment and technologies, and also to meet every type of challenges that our country is directly facing from the respective area, basically from Bay of Bengal, Arabian Sea, as well as from Indian Ocean region. ओके तो आज यहाँ पे टैप करने से जो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट टैप कर रहे हैं उससे that is also a very need of the hour. Also, we need to focus on the respective strategies that we need to counter if any number of threat is basically coming in from the seaside, as well as any number of threats directly coming in naturally in the form of disasters. तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी और जो मैराइन पोल्यूशन किया जाता है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ दिस respective plastic products and all use of chemicals and all which directly finds the way to the respective seas. तो ये हम लोग को टैप करना है in the respective countries so that we could make these resources very much of useful in the coming times. Okay, so this was all with this respective editorial. So we have this 5 narrow MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.